चाहूंगी मैं। देश में जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होगी तब इस देश की समस्त मातृशक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कदम की सदैव ऋणी रहेगी। महोदय, आज का भारत नया भारत है। आज का भारत युवा भारत है। आज का भारत ऊर्जा से भरा भारत है। आज का भारत महिला सशक्तिकरण का भारत है। आज का भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता कर विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला भारत है। अतः अंत में मैं सभी महिलाओं की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करती हूं कि आपने हम सभी महिलाओं को सम्मान से जीने का बारंबार अवसर प्रदान किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महिलाओं के अधिकार के समर्थन में लाए गए इस महत्वपूर्ण बिल का मैं समर्थन करती हूं। बहुत बहुत थैंक यू। श्री J.K. वासन, माननीय सदस्य J.K. वासन। Sir, I stand here to support this important bill on behalf of my party, Tamil Maanila Congress, Moopanar, sir. Sir, for the past 4 decades, many governments have been trying to pass the examination for bringing this bill positively. Unfortunately, sir, they have failed for various reasons. Today, madam, the Bharatiya Janata Party, its government, has passed the examination of winning the women's bill being passed in both the houses. This was the dream come true for our women in the country. I thank the government and support the government on this historic day. Madam, responsibility and empowerment are the need of the hour today after this bill is passed, which our forefathers of the nation wished. I am sure this will be achieved through the continuance of this government after the next election. Especially, madam, this bill is being passed at the 75th year of the Amrit Kal, which is very special. Today, our women in the country are achieving exemplary goals in various fields. Army, Navy, and Air Force. They are in the top positions and doing wonders. They are examples for the world. Yesterday we discussed about women's role in space and science. Women in India excel in all fields. We see women in various capacities. Today, the first person of the country is the President of India, governors, ministers, party presidents are all women today. Unfortunately, legislation, we are very low. That is why we have come forward to introduce this important bill. Madam, to conclude, I wish to quote the famous and apt lines of poet Bharati, a popular and immortal poet of Tamil Nadu. பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் ஏட்டு அறிவினில் ஆணுக்கிணங்க பெண் இளப்பிள்ளை கானொன்று கும்மியடி. To put in English, the immortal poet Bharati says, women have come to govern offices and enact laws. The world will prosper in wisdom if we respect women as equal to men. The value of men is to protect women's self-esteem. Then there will be nobody else to degrade. And now the time has arrived to fulfill our long-pending aspiration. As the representative and leader of Tamil Maanila Congress, Moopanar, I support this bill wholeheartedly and thank the government, the Prime Minister, for bringing this bill at the right time. Thank you very much. Thank you. Srimati Sangeeta Yadav.
माननीय सभापति जी, आपने मुझे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करती हूं और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूं। और यह मेरी मेडन स्पीच है, तो आपका संरक्षण भी चाहूँगी। माननीय सभापति जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देश की आधी आबादी की तरफ से मैं साधुवाद देती हूं कि लोकतंत्र के इस नवनिर्मित मंदिर में पहला अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक अधिकार को दिलाने को लेकर वो आए हैं। माननीय सभापति जी, कल हम लोकसभा में सुन रहे थे माननीय गृह मंत्री जी को, उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देना या सशक्त करना कभी भी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा नहीं रहा है। अरे नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम तो महिलाओं की मान्यता से, सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। मातृशक्ति को सम्मान देने वाला अधिनियम है, महिलाओं के लंबे संघर्ष को खत्म करने वाला अधिनियम है। और माननीय सभापति जी, मैं ग्रामीण क्षेत्र से 2017 से लेकर 22 तक एमएलए रही, तो इन 9.5 वर्षों में कैसे महिलाओं के जीवन स्तर में क्या सुधार आया है, ग्रामीण स्तर पे मैं बात करना चाहूँगी, ग्रामीण स्तर पे, और कैसे उनकी सोच बदली है, कुछ अपने एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहती हूँ माननीय सभापति जी। और ये भी आंकड़ों के साथ बताऊँगी कि कैसे हमारा महिलाओं को आगे बढ़ाना राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हम आगे तो बढ़ रहे हैं माननीय सभापति जी, आधुनिकता का नारा भी लगा रहे हैं, परंतु जब महिलाओं से जुड़े मुद्दे आते हैं तो सत्ता चुप हो जाती है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल राइट टू हाइजीन से है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी था राइट टू हाइजीन। सैनिटरी पैड के बिना यह कभी भी संभव नहीं था। हमारे देश को महिला प्रधानमंत्री भी मिली थी, लेकिन कभी भी ये चर्चा का विषय नहीं रहा। माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि माननीय मोदी जी ने 2020 में लाल किले से 15 अगस्त को सैनिटरी नैपकिन का उल्लेख किया और उसके बाद से यह एक अभियान बना और हजारों लाखों महिलाओं को जाने कितनी बीमारियों से हमने बचाया है। तो माननीय सभापति जी, मैं इसी में एक और उदाहरण जोड़ना चाहूँगी। मैं अब जब विधायक थी तो बहुत ग्रामीण स्तर पर महिला और पुरुष कोई भी हो, बीमारी के लिए हम लोग पैसा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दिलाते थे। तो इसमें पुरुष भाई थोड़ा बुरा नहीं मानेंगे, जो मेरा अपना अनुभव है मैं वही बता रही हूँ। जब पति को कोई बीमारी हो जाती थी और पैसे दिलाने के लिए पत्नियाँ आती थी तो बोलती थी, बहनी पैसा मिलने में टाइम नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो बताना, मैं अपना खेत बाड़ी बेच दूंगी, लेकिन इनको ठीक कराऊंगी। लेकिन जब वही गंभीर बीमारियों से हमारी बहनें पीड़ित होती थी और पुरुष भाई आते थे तो क्या बोलते थे, अरे बहनी टाइम लगेगा क्या, तनी और मेहनत करा, थोड़ा सा और मेहनत करे, पैसा मिलेगा तो इलाज शुरू करवा देंगे। ये सोच में अगर किसी ने फ़र्क डाला है तो वो आयुष्मान कार्ड योजना ने डाला है माननीय सभापति जी। आज आयुष्मान कार्ड होल्ड, जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाती हूँ तो जगह जगह मुझे मेरी बहनें मिलती हैं और वो कहती हैं कि आयुष्मान कार्ड का लाभ अधिकांश महिलाएं उठा रही हैं और कैसे उठा रही हैं। माननीय सभापति जी, स्वच्छ मिशन भारत के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये भी बहुत चिंताजनक बात थी कि देश की आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी 11 करोड़ शौचालय हमने परिवारों को पहुंचाए हैं। कई बार मैं विपक्ष को सुन रही थी, लोग कह रहे थे बीजेपी वाले हैं छोटी बात करते रहते, वाकई में छोटी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये छोटी बात पहले आप लोगों ने कर दी होती तो हमें कहने की ज़रूरत कहाँ पड़ती। मैं उज्ज्वला की बात करूँगी, उसमें भी एक छोटा सा आपका अनुभव बताऊँगी। जब कभी ग्रामीण क्षेत्र में खाना बनने का समय ना हो और हम लोग पहुँच जाते थे और कोई महिलाओं से कह देता था कि चाय बना दो, तो कोई कह तो कुछ नहीं पाती थी, लेकिन चूंकि मैं घर के अंदर जाती थी तो मैंने उनके चेहरे पर वो झिझक देखी थी, वो परेशानी देखी थी। लेकिन आज जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं, अरे बहनी बैठो, मोदिया का सिलेंडर है। तो मतलब ये जो बदलाव है जीवन में, ये मैंने अपने अनुभव देखा है, सुना है। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे हमने गैर राजनीतिक कार्य महिलाओं को सशक्त करने के लिए किया है। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आती है और जब माननीय प्रधानमंत्री इसकी बात करते हैं तो मैंने देखा कैसे लोगों ने अपने गाड़ियों के पीछे लिखा, अपने घर की दीवार पे लिखा, सोशल मीडिया पे अपने डीपी बनाया। और उसी की देन है कि हमारा घरेलू हिंसा कम हुआ है, सेक्स रेशियो बढ़ा है, महिलाओं के प्रति सोच बदली है। और जब सेल्फी विद डॉटर शुरू हुई तो बच्चियों का समाज में सम्मान बढ़ा है। एक और अनुभव बताती हूँ माननीय सभापति जी, 2014 में जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो जनधन खाता योजना आई
उस समय मैं विधायक नहीं थी, पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता थी और मैंने गांव-गांव में जाके कैंप लगाना शुरू किया। तो जब महिलाएं घूंघट में आती थी तो वो यकीन नहीं करती थी कि एक फार्म भरने से खाता खुल जाएगा। अरे नहीं बहनी, लेकिन जब खाते खुल गए तो वो लोग मुझे बहुत कई बार धन्यवाद देने भी आई और आज 52 करोड़ लगभग जनधन खाते के अधिकांश लाभार्थी हमारी महिलाएं हैं। और जब ये खाता खुला तो मखौल भी उड़ाया जा रहा था, लेकिन आज जब बिना लीकेज के पैसे पहुंचते हैं तो इससे हमारे पीएम साहब की दूरदर्शिता हमें दिखाई देती है। इसी की अगली कड़ी मुद्रा योजना है। हमारे मोदी जी ने सोचा कि महिलाओं का बैंक में आना जाना शुरू हो गया है, अब अगली कड़ी ये है कि अब वो अपना कुछ लोन लेके अपना व्यापार भी शुरू करें। आज मुद्रा योजना की 70% जो लाभार्थी हैं वो हमारी महिलाएं हैं। माननीय सभापति जी, मैं अभी बेटियों को तो बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा आंकड़ा बता देना चाहूँगी कि कैसे हम ग्रामीण स्तर पे और राजनीतिक स्तर दोनों पे चल रहे हैं। माननीय सभापति जी, हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण में विशेष बल दिया है, जहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्व सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण तबके की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में कार्य किया है। वहीं पर अपनी मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा महिला मंत्रियों के अब तक का रिकॉर्ड है रखकर उनको राजनीतिक रूप से सशक्त किया है। 8 महिला राज्यपाल बनाने का रिकॉर्ड भी हमारी सरकार के पास भी है। देश के सर्वोच्च पद पर आज माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आज मैं बताना चाहती हूँ कि माननीय सभापति जी, मैं सबसे निवेदन भी यहाँ करना चाहूँगी कि हम ये इतिहास रचें और ये जो हम राजनीतिक एजेंडे के रूप में नहीं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो बिल लेके आए हैं उसमें सभी का समर्थन मिले। मैं अभी सुन रही थी सुबह से, चूँकि मेरा अंत में काफ़ी लास्ट में टाइम आया है तो अच्छा सुनने का मौका मिला। लोग कह भी रहे थे कि ऐसे बिल की क्या ज़रूरत है। उसमें मैं कुछ 2-4 बातें रखना चाहूँगी। माननीय सभापति जी, आज भी हमारे जब देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, हमारा संकल्प है कि देश को 2047 तक पूर्ण विकसित देश बनाना है। इस उद्देश्य के लिए माननीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मूल मंत्र दिया है। लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी देना बहुत ज़रूरी है। माननीय सभापति जी, लोकसभा के 539 संसद सदस्यों में से मात्र 82 ही महिला सांसद हैं। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह भी 2019 के चुनाव में ही अभी तक सर्वाधिक भागीदारी है। माननीय सभापति जी, यही हाल देश की विधानसभाओं का भी है। लगभग पूरे देश में विधानसभाओं में महिला विधायकों का औसत केवल 8% है, संसद में 15% से भी कम है। इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि आधी आबादी को उनका हक दिलाने की बातें तो बहुत ज़ोर ज़ोर से की जाती रही हैं, लेकिन बराबरी का दर्जा कभी नहीं दिया गया। हर क्षेत्र में महिलाएं आज परचम लहरा रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्पेस हो। अब ये सोचने का समय है कि प्राचीन भारत की नारी की गौरवशाली यात्रा कहाँ पीछे रह गई। हम तो धन के लिए लक्ष्मी जी को, विद्या के लिए सरस्वती जी की पूजा करते रहे हैं और इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुबह बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी, भारत में अर्ध नारीश्वर के रूप में सम्मान पाने वाली स्त्री पुरुषों से कैसे पीछे रह गई, ये हमारे सोचने का समय है। और उसी परिणति के रूप में यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हमारी पार्टी लेके आई, हमारी सरकार लेके आई है। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, जैसा कि हमने G20 की अध्यक्षता में देखा भी। G20 की बैठक में महिला नेतृत्व की भागीदारी पर चर्चा हुई। ऐसे में यह अति आवश्यक है कि देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का हर संभव कानून बनाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ मेरी पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टी के भी नेतागण मौजूद हैं। आज जब किसी भी राजनीतिक पार्टी में हम देखते हैं तो महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पुरुषों के बराबर ही दिखाई देती है। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अब भागीदारी पुरुषों के बराबर है। अब यह कार्यकर्ता के रूप से जनप्रतिनिधि बनने का सफ़र हर महिला का एक सपना है, एक इच्छा हो रहा है। और मैं ये चाहूँगी कि महिलाओं की इस इच्छा पूरी करने में पूरा सदन सरकार का सहयोग करे। मुझे हर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पद पर महिला आरक्षण तो पहले से ही लागू है। मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूँगी कि हमारी महिला बहनें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है
1971 में ये महज 48% थी, 2014 में ये 67% से भी ज़्यादा हो गई है। जागरूक मतदाता, बस मैं मेरी मेडन स्पीच है, बस 1-2 मिनट लूंगी बस। आपको ऑलरेडी मेडन स्पीच के तहत 10 मिनट समय मिला, प्लीज 30 सेकेंड्स, क्योंकि कुल 70 वक्ता हैं, अभी बहुत लोग बोलने बाकी हैं। मैडम, मतदान के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही हैं। अब ये हमारा समय, अब हम ये समय आ गया है कि आधी आबादी को उनको राजनीतिक सहभागिता का समान अवसर मिले। माननीय सभापति जी, अभी मैं सुन रही थी तो लोग कह रहे थे कि लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा 10 साल महिला थी, लेकिन महिला बिल नहीं आया। प्रधानमंत्री भी महिला थी, राष्ट्रपति भी महिला रही, लेकिन ये बिल नहीं आ सका। तो मैं आज अपने सभी लोग निवेदन के साथ इस बिल को समर्थन करें, इस बिल को समर्थन करें, इसी निवेदन के साथ अपनी नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ, 3 मिनट्स ओनली सर। आदरणीय उपसभापतिज्यू, आज म नारी शक्ति बन्धन 128 संशोधन बिल 2023 को समर्थनमा म यहाँ उभिरहेको छु सिक्किम जनताको पक्षमा। र यो ऐतिहासिक दिनमा भारत सरकारलाई बधाई दिन चाहन्छु। साथमा सारा भारतका नारी या चेली सबलाई बधाई दिन चाहन्छु, किनभने आज यो बिल पारित भइहाल्छ, भोलिदेखि यो कानुन हुन्छ। अनि साथमा सिक्किम राज्यमा नारी सशक्तिकरणमाथि या अथवा उत्थानमाथि थुप्रो काम भएको छ। विशेष गरी एसडिएफ सरकारको शासनकालमा 50% आरक्षण पञ्चायत र अर्बन लोकल बडिजमा भएको छ। र आज त्यो साथसाथमा 33% सरकारी कर्मचारीमा नारीहरूलाई सिट आरक्षण भएको छ। अनि यो प्रकारले आज यो ऐतिहासिक दिनमा म भारत सरकारका सारा नेतालाई या सरकारलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, लामो समयदेखि थातीमा रहेको लिम्बू र तामाङ समुदायको 2003बाट माग गरेको विधानसभामा सिट आरक्षणको मागलाई पनि यो साथसाथमा हेरचाह गरिदिनु भएको खण्डमा सारा सिक्किमे जनता भारत सरकारसँगै हामी आभारी रहनेछु। र यो बिलको साथमा हाम्रो लिम्बू तामाङको पनि अलिक केही रेखदेख भइदियोस् भनेर म तपाईँ सबलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु। र यो साथमा आजको बिल जो लेख छ त्यसको निम्ति हामी सारा सिक्किमे जनताको तर्फबाट हामी समर्थन गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही राख्न चाहन्छु। जय सिक्किम, जय सिक्किमे जनता। बहुत धन्यवाद हिसेला चुंगुपा जी। डॉक्टर कल्पना सैनी। मैं आज लोकतंत्र के नए घर, जिसमें आत्मा वही पुरानी है, मैं नारी शक्ति वंदन बिल के समर्थन के लिए खड़ी हुई हूँ। आदरणीय उपसभापति जी, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर, जो स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा बनेगा, बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी भी सदस्य का विरोध होना चाहिए। ये हो सकता है और हुआ भी है कि विभिन्न दलों ने इसमें अपना क्रेडिट लेने का प्रयास किया है। मैं अपनी बात को, चूँकि मेरे पास सीमित समय है, मैं बहुत संक्षिप्त में कहने का प्रयास करूंगी। जब सत्ता थी, अंतिम छोर पर बैठी भारत की उस संघर्षशील नारी के लिए दूरगामी नीतियां बना करके प्रयास नहीं किए गए और न ही अपने भारत की इस आधी आबादी को संरक्षण देना चाहा। और तो और मेरे देश की गौरवशाली महिलाओं के इतिहास की भी चर्चा नहीं। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को,
अपने लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने न सिर्फ महिलाओं के लिए सोचा बल्कि अपनी सरकार की दूरगामी नीतियों के द्वारा उन्होंने उस महिला के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया। मुझे याद है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से घर घर जाकर छोटी बच्चों के स्कूल में दाखिले का अभियान चलाया, वो इस तरह की हर छोटी शुरुआत से लेकर जीवन को बदलते हुए नारी के आज वो इस विधेयक तक आ पहुँचे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। हालांकि आज भी विपक्ष ने भ्रमित करना चाहा, न्यायोचित रास्ते का विरोध करते रहे, पर मैं अपनी बात को संक्षिप्त में ही पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उनमें व्यक्त करते हुए आपका समर्थन चाहती हूँ। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो घर घर शौचालय बनवाकर महिलाओं के अभिशापित जीवन से मुक्ति दिलाने का माध्यम कौन बना? मोदी जी। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के द्वारा बेटी का जीवन संवर्धित संरक्षित करने का माध्यम कौन बना? मोदी जी। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो उज्ज्वला योजना लाकर धुएं से घुटते जीवन से बचाने का माध्यम कौन बना? मोदी जी। अरे प्लीज। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर बराबरी का स्तर दिलाने का माध्यम कौन बना? मोदी जी। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो प्रधानमंत्री आवास योजना से घर की आधिकारिक स्वामिनी बनाने का माध्यम कौन बना? मोदी जी। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो किशोरियों गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष योजना चला, स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का माध्यम कौन बना? मोदी जी। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो कोसों पैदल चलकर भी प्यासे जीवन से बचने का हर नल में जल जल जीवन मिशन द्वारा मजबूर होने से बचाने का माध्यम कौन बना? मोदी जी। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो तुम्हारे गांव के घर घर में बिजली व राशन पहुंचाकर जीवन को सुगम बनाने का माध्यम कौन बना? मोदी जी। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो संघर्ष भरे अनुसूचित जनजाति जीवन को महामहिम तक लाने का माध्यम कौन बना? मोदी जी। प्लीज कंक्लूड, आपका समय खत्म हुआ मैडम, प्लीज। सर एक मिनट। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो मैं गांव गली की ओबीसी महिला आज उच्च सदन की सबला बन बैठी हूँ, इसका माध्यम कौन बना? प्लीज प्लीज खत्म हे करें। संघर्षशील भारत की नारी, मुझे मैं बताओ दूसरे तो स्पीकर को बुलाऊंगा मैडम, प्लीज। आज महिला आरक्षण बिल से राजनीतिक अधिकार सुरक्षित होंगे, इसका माध्यम कौन बना? प्लीज प्लीज कंक्लूड। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इस बिल का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। 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 ऑनरेबल जोस के मनी, यू हैव 3 minutes, sir. Thank you, sir. Sir, about 12 years back, during the year 2011, I had an opportunity to participate in the Inter-Parliamentary Union meeting in Switzerland, along with the Lok Sabha Speaker. There I was asked to speak on a plenary session, and the topic was women empowerment. I was given a 5 minutes time, and I spoke about the greatness of India. I spoke about the first citizen of India, the president, a woman, Pratibha Patel. I spoke about the Lok Sabha speaker,
the then Lok Sabha Speaker Meera Kumar. I spoke about the Chief Minister of Delhi, Sheila Dixit. I spoke about Jayalalitha, the CM of Tamil Nadu. I spoke about Mayavati. And I came to my small, beautiful state of Kerala. I said, the got some country and the most literate state in India. And we have a reservation for the local body of 50%. And we have the best governance in the local body in India. Then I came to the subject that we have introduced in the Rajya Sabha about a 33% reservation and the discussion. And that time, my 5 minutes, 5 minutes time has been elapsed and I was exhausted. My microphone was switched off and I came back to my chair. And the other next speaker was called on. But the co-chairman was a lady. She came to me, to my chair and asked, what did you say last? Did you pass it in the Rajya Sabha and Lok Sabha? I said, no, it has been introduced. Then she told me that you should pass it at the earliest and you should take the initiative. I was just thinking, why in other country, a lady is asking me to pass a legislation. It is not of her concern. But I later came to know that being in the largest, the biggest democratic country in the world, when we pass a legislation like the Women Empowerment Reservation for the women, there will be a compulsion for the other democratic country to pass the same bill. Having said that, the whole world is watching. Today in Rajya Sabha, yesterday in the Lok Sabha, not only the bill passing, but are they going to implement it? How candid, how sincere are the government's approach in implementing it? The Indian citizens are watching this. My only request is, you need to implement immediately 2024 election itself. What is the hassle? You say you need to go for the census and for the delimitation. You have the list of all the electoral, the female and male voters of 2019. 2 minutes, sir. No, always sir. when I speak, you are very strict. 30 seconds. I think the men should speak more for the ladies than the ladies. So last few seconds, sir. See, you call us this for the special session. If it is a special session, you need to implement a 2024. Otherwise, you should not call in for the normal session in the winter session. Why should you call here Thank now? you. So I am calling just other speaker asking now. the sincerity of it. Thank you. Please see Honorable that the bill is Shri Vivek passed Thakur. during the 2024 Vivek election Thakur ji. itself. Thank you so Nothing much. is going on. And I Manya support- Vivek Thakur, please. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। इफ नॉट अस देन हु, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, ये शब्द मेरे नहीं, ये कथन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी का है, जो उन्होंने तब कहा था जब अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था। आज हमारे समक्ष भी यही प्रश्न है, इफ नॉट अस देन हु, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। भारत की महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए आज़ादी के इस अमृतकाल में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम। आदरणीय सभापति महोदय, 26 वर्ष हो गए जब इस संकल्पना ने संशोधन का आकार लिया था, जब भारत अपने आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण कर चुका था, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पबद्धता का ही परिणाम है कि यह संशोधन पास होकर मूर्त रूप ले रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, क्या केवल ये बोलने से कि ये बिल हमारा है आपकी जिम्मेवारी पूर्ण हो जाती है? तेरा मेरा करने से क्या भला होगा? उनके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा। न मेरा एक होगा, न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी, न मेरा मजाक होगा, गुरूर न कर शाहे शरीर का, यह शरीर भी एक दिन खाक होगा। आदरणीय सोनिया जी की कल की लोकसभा के बहस में एक और बात कही जिससे मैं असहमति व्यक्त करता हूँ। कल लोकसभा में उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में ये कहा कि धुएं से भरी रसोई से लेकर स्टेडियम की जगमगाती रोशनी तक स्त्री का सफ़र बहुत लंबा है। यह आपकी सरकारों में जरूर हुआ करता था,
जब स्त्री की रसोइयों से धुआं उठता था, आज उसकी रसोई उज्ज्वला से उज्जवल। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि जहां अमेरिका जैसे राष्ट्र को महिलाओं को वोटिंग राइट देने में 120 वर्ष लग गए, वहां भारत की संविधान सभा ने महिलाओं को शुरुआत से ही समान मताधिकार दिया। क्या इसके बाद हमारी जिम्मेवारी पूरी हो जाती है? क्या हम आश्वस्त हो चुके हैं कि हमने महिलाओं को उनके अधिकार दे दिए हैं? नहीं, सितारों के आगे जहां और भी। सभापति महोदय, इस बिल का भी एक जीवन है, आयु 26 साल, और इस जीवन में इस बिल ने काफी उतार चढ़ाव, धोखा, पॉसिबल टू इम्पॉसिबल जैसा ही इसका जीवन रहा है। प्लीज टेक योर सीट, प्लीज। प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। आप बोलो। और इस जीवन में इस बिल ने काफी उतार चढ़ाव, धोखा, पॉसिबल टू इम्पॉसिबल जैसा ही जीवन रहा, किंतु आज इसके 26 साल के तप का फलीभूत होने का ऐतिहासिक दिन आज आ गया है। लेकिन इसके अनुभव और त्याग की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। आदरणीय सभापति महोदय, ये संशोधन लाना क्यों जरूरी था, इसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। महिलाओं के लिए अक्सर ग्लास सीलिंग की चर्चा होती है। ग्लास सीलिंग अर्थात वो बाधाएं जो दिखाई नहीं देती। राजनीति के संदर्भ में ये ग्लास सीलिंग की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई कुछ ज़्यादा होती है और उसकी बानगी में पूर्व के प्रमुख नेताओं के बयान के द्वारा सदन के समक्ष रखना चाहूँ। एक हिंदी भाषी राज्य के पार्टी के संस्थापक ने महिला आरक्षण बिल का जब विरोध किया तो कहा कि सिर्फ अमीर और शहरी महिलाओं को फायदा होगा और गरीब गांव की महिलाओं को नहीं, क्योंकि वो आकर्षक नहीं होती। और महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो पार्लियामेंट में भी सीटी बजाने वाले लोग आएंगे। ये दुखद वाकया हो चुका है। इसके साथ जदयू के हम पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिला आरक्षण बिल का विरोध करते हुए परकटी महिला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था और लालू जी ने अपने सांसद से बिल को ही सदन में फड़वा दिया था। अब आप सोच सकते हैं कि ग्लास सीलिंग के कैसे उदाहरण हैं। ये वाकया सब हो चुका है। राजनीति में ग्लास सीलिंग का एक और उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। तमिलनाडु विधानसभा में स्वर्गीय अम्मा जी के साथ क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। अगर सदन में 33% महिला विधायक होती तो तमिलनाडु सदन का यह दुखद वाकया भी नहीं होता। आदरणीय सभापति जी, यही ग्लास सीलिंग है जिसको दूर करने का प्रयास ये बिल करता है। ऐसा ही एक और उदाहरण मुझे याद आता है जो सीधे तौर पर इस बिल से जुड़ा हुआ है। जब स्वर्गीय गीता मुखर्जी ने बिल को प्रस्तुत किया था और लेफ्ट के हमारे साथी मौजूद हैं, कितना विरोध उनको झेलना पड़ा था, परंतु दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिला सांसदों ने उनका साथ दिया और उसमें सबसे प्रमुख नाम स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का था। उन्होंने कहा था ऑन रिकॉर्ड कि ये बात कि अगर आप रोड पर इस बिल को लेकर संघर्ष करेंगे तो मैं आपके साथ। प्लीज आप बोले। ये तब होता है जब सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता है तो उनकी सामूहिक क्षमता भी बढ़ती है। कल लोकसभा की चर्चा में भी और आज सदन में भी चर्चा के दौरान ये बात विपक्ष के साथियों ने रखी कि आप बिल को कब लागू करेंगे, तारीख बताओ, तारीख कब बताओगे। और इसी से मुझे राम मंदिर आंदोलन का दौर याद आता है सभापति महोदय, जब हमसे ये सवाल पूछा जाता था हम पर तंज कसते हुए, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज क्या स्थिति है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो मैं अपने मित्रों को यही बताना चाहूंगा, तारीख बताई नहीं, तारीख बनाई जाती है। खत्म कर रहे हैं विवेक जी। सर मुझे 10 मिनट बोला गया था सर। प्लीज कॉल आपके मुंह से तो ये बिल्कुल समय ओवर हो गया। मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। ये शोभा नहीं देता सर। बीच में तो ये स्क्रीन का लफड़ा शुरू हुआ कि जो 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण का कानून तो पारित कर देते हैं, परंतु लोकसभा में अलायंस के बहुमत होने के बावजूद इसको अटका देते हैं। मैं अब दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ। विवेक जी प्लीज 2 मिनट सर। नो कंक्लूड कर रहा हूँ सर। मैं बुला रहा हूँ दूसरे 30 सेकेंड्स प्लीज। सर इस महिला सशक्तिकरण की योजना के 9 साल के बेमिसाल में सर एस्पिरेशन बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा और महिलाओं के राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका जो आई है, इसका कई उदाहरण है जिसकी चर्चा भी इस सदन में हो चुकी है।
और ये प्रधानमंत्री जी के वुमेन डेवलपमेंट के बजाय वुमेन लड डेवलपमेंट के स्पष्ट विजन का यह सूचक है। तारीख मांगने वालों को संविधान पढ़ना चाहिए और मेरा यही कहना है कि 7 सिफारिशें। Please speak. Your speech will go on record. सभापति महोदय, Nothing is going on record. No, please, Doctor. Thank you, Deputy Chairman, sir. On behalf of my party, Patali Makkal Katchi PMK, I rise to support this bill. Sir, in India, till about 100 years ago, women weren't allowed to go out of the houses. Till about 75 years ago, women weren't allowed to vote. Till about 50 years ago, women weren't allowed to go to colleges. Till about 25 years ago, women weren't allowed to go to work. Today, it has all changed. Women are being empowered, but at a very, very slow pace and in very few numbers. Sir, down 25 years, I like to see a situation in India where women are so empowered that men will try to bring in a similar bill in Parliament for themselves in this August House. Sir, after the 73rd and the 74th constitutional amendment, brought in 1992 and 93, we had the first local body elections in 96. During that elections, many of the party cadres had made their wives, their daughters, and their mothers as panchayat presidents or samiti presidents or district zilla parishads, thinking that they could control them through proxy. But then I saw after 2 years, the women acted independently. By the end of their tenure, they did wonderfully well in their positions they held, and some of them got re-elected again and went on to become MLAs and MPs and ministers. So if you give women an opportunity, they definitely will excel in whatever they are doing. So I have 2 requests to the government. One, to kindly bring in the OBC representation in this bill. Either today or at least during the winter session, bring in an amendment so that OBC women are equally represented, because they comprise 60% of Indians' population, and without the empowerment of OBC women, India can't develop. Second, sir, we have 3 pillars of democracy: the legislature, the executive, and the judiciary. We have fulfilled the demand of the legislature because we have a reservation for women in the local bodies, and today we're bringing in for MLAs and MPs. I kindly request the government to bring in reservation for women in the executive as well as the judiciary also. After 75 years post-independence, we still haven't had a woman Chief Justice of India. And there are very few women judges in the High Court and the Supreme Court. We need more women officers in IAS, IPS, IPS, IFS, and defense sector. And definitely we need, so the government should bring in an act, an amendment, constitutional amendment, so that women are empowered in the executive as well as the judiciary. Sir, please, I would like to end with the saying, if boys get education, only he is educated. But if girls get education, the entire family gets educated. And I would urge upon the government to empower women, respect them, and give them empowerment in all sections of society. And that is when India will become a developed country. Thank you very much. With these words, I support the 128th Constitutional Amendment Bill 2023. Thank you, sir. Thanks for confining yourself to time. Please. Shri Biplav Kumar Dev, 3 minutes. Mani Biplav Kumar Dev. Nothing is going on record. Please. Mani Biplav Kumar Dev, 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. बोलिए. आप बोले आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। नारी शक्ति बंधन विधायक 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023, मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं जब आज घर से आ रहा था तो मेरे 2-4 मित्र मिले हैं, पुरुष स्वाभाविक होगा, तो मुझको बोल रहा था आप सुना आज बोलने वाले हैं, तो बाद में आपका क्या होगा आप लोगों का। तो मैं तब से सोच रहा हूँ मेरे मित्र को जाके क्या बताऊँ।
मैं तो ये सोच रहा हूं, मेरे माँ ऐसा सोच लेती तब विप्लव यहाँ कहाँ पहुंचता। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस सभागार में देखा हूं सुबह से अपने अपने दल के नेता का नाम सब लोग लेते हैं, हमने किसी ने विरोध नहीं किया। जैसे ही मोदी जी का नाम लेते हैं तो जैसे सांप सूंघ जाता है। देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है। आप सुबह से आप चेयर को एड्रेस करिए शाम प्लीज। तक आप, मैं माना नहीं कर रहा हूं, आप अपने आप इधर प्रदेश बोलिए, के नेताओं का नाम लीजिए, आप इधर बोलिए लीजिए। किंतु प्रधानमंत्री का नाम आते ही जैसे आसमान टूट पड़ता है। मैं आज बताता हूं, मैं बताता हूं आपको, सुनने का क्षमता रखिए। हमने छोटे से सुना जो देश में सामाजिक और आर्थिक सुधार हो रहा है। असलियत में देश में आर्थिक और आर्थिक और सामाजिक सुधार किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लाया है। सुन लीजिए, सामाजिक सुधार के बाद बहुत लोगों ने बोला है, सामाजिक सुधार के बाद नरेंद्र भाई मोदी बोलता है, करता है। 3 तलाक उन्होंने ही खत्म किया। आर्टिकल 370 अमित भाई शाह जी गृह मंत्री बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व ही सुधार हुआ है। राम मंदिर बन रहे हैं, ये सामाजिक सुधार हुआ है। आज महिला आरक्षण बिल आया है, ये सामाजिक सुधार हो रहा है। अरे मातृशक्ति जब तक नहीं बनेगा 30 तो भारत माता का जय कैसे हो सकता है? 30 सेकंड्स विप्लव जी प्लीज, टाइम कांस्टेंट प्लीज। उपसभापति महोदय प्लीज, मैंने ये बात बताना चाहता हूँ विरोधी पक्ष के मेरे कांग्रेस के मित्रों को, हमने कुछ नहीं बोला। मैं बताऊंगा प्लीज आप इधर चेयर को एड्रेस करिए। कपिल सिब्बल जी सुनिए, कपिल सिब्बल जी आए थे, आके 3 मिनट वक्तव्य रखा। उन्होंने बोला ये महिला आरक्षण बिल में कमी है, ये 29 तक भी नहीं कर सकता है, और 29 तक नहीं करेगा तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देगा क्या? नहीं। इसका मतलब कांग्रेस ने मान लिया 24 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ही रहना। धन्यवाद, धन्यवाद। हमने नहीं बोला, कपिल सिब्बल जी ने बोल के गया। विप्लव जी धन्यवाद। इसलिए आप लोगों ने मान लिया। दूसरे स्पीकर महिला आरक्षण हो, कोई भी बात हो, हम ही के लोगों को करना है। और इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ भारत के सभी महिला को, इस सभागार में जितने भी महिला है सबको भी नमन करता हूं। धन्यवाद। जो आप लोग मेरे जगह भी लेना चाहते हो राज्यसभा में, ले लो, तब भी महिला को आने दो। धन्यवाद। ऑनरेबल श्री रवंग वरान नार जारी, 3 मिनट्स। 3 मिनट सर। धन्यवाद सर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान 128 संशोधन विधेयक 2033 पर बोलने की आपके अनुमति के लिए मैं आपका आभारी हूँ। महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य विधानसभा सहित लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 कोटा प्रदान करने का प्रावधान करता है। विधेयक का इरादा स्पष्ट रूप से महिला सशक्तिकरण के माध्यम से नारी शक्ति को आगे लाकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना से 2047 तक विकसित भारत हासिल करना है। हालांकि महिला आरक्षण का विधेयक संसद में कई दशकों से लंबित है, और लंबित होने का कारण केवल अपेक्षित संख्या प्राप्त न कर पाना था। मुझे खुशी है कि आज इसे पारित करने के लिए मोदी जी द्वारा इसे संसद में नए सिरे से लाया गया है। मैं इस विधेयक को मंजूरी मिलते ही महिलाओं के लिए राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण मंच में जनप्रतिनिधि के रूप में भाग लेने का द्वार खोलेगा। मैं ST/SC समुदाय के लिए भी आरक्षण के प्रावधान पर सहज महसूस करता हूं, और इससे दलित समुदाय को महिला सशक्तिकरण का द्वार खोलेगा। मैं यूनाइटेड पीपल्स पार्टी रिबल UPPL के ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, और इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके साहसिक कदम के लिए धन्यवाद, जिससे महिला शक्ति मजबूत होगी। मुझे उम्मीद है कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा। जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं, यही समय है, यही सही समय है। समय मोदी जी का इंतजार कर रहा था और मोदी जी किसी का इंतजार ना करते हुए कर दिखाया। यदि हर राजनीतिक दल सचमुच महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं तो महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा एक बार सर्वसम्मति से हल किया जाना चाहिए और पारित किया जाना चाहिए। मैं भारतीय महिलाओं को अभिनंदन देना चाहता हूं। आज नया संसद से नया एक अधिकार मिलने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर के लक्ष्मण 3 मिनट 3 minutes. Deputy Chairman, sir, it is indeed a privilege for me and feel honored to stand in the support of this Women's Reservation Bill, which is supposed to be an historical bill which can be written in golden letters of Indian annals. At the outset, I would like to thank our beloved Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, for bringing out such an important बिल फॉर वुमेन रिजर्वेशंस। नव भारत के निर्माण के लिए नया संसद का भवन के अंदर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहला बिल लाया गया। ये मोदी जी को धन्यवाद। मोदी जी के नेतृत्व में संभव इसीलिए हुआ, कई लोग तो कई साल से प्रयास किया जा रहा पर किसी से मुमकिन नहीं हुआ। मोदी जी से मुमकिन हुआ, इसलिए मोदी जी है तो मुमकिन है। जब मोदी जी सबका साथ सबका नारा लेते हैं तो समाज के भिन्न वर्गों के हित के लिए ये काम करते हैं। मैं कल से सुन रहा था, खास तौर से हमारे कांग्रेस भाई, हमारे बाकी क्षेत्रीय दल ओबीसी समाज के बारे में इतने हमदर्द बता रहे कि मुझे समझ में नहीं आता। जब भी ये महिला आरक्षण का मुद्दा आया, क्यों ओबीसी समाज का ये इसमें जुड़ा जा रहा है, समझ में नहीं आता। क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा ओबीसी विरोधी है। नेहरूजी जमाने से लेकर आज राहुल गांधी तक एक इतिहास के पन्ने में अगर देखेंगे तो पता चलेगा। काका कलेक्टर कमीशन गठित किया नेहरू जी ने, तब से लेकर मंडल कमीशन तक जब जब समय समय पर ओबीसी समाज का आरक्षण का मुद्दा आया, ये कांग्रेस से हमेशा खिलाफ किया। कम से कम काका कलेक्टर कमीशन को दोनों सदन में चर्चा तक नहीं करते हुए किस तरह तंडे बस्ती में डाल दिया गया, ये कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने आज मगरमच्छी के आज आंसू बहते हैं। दे आर ट्राइंग टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टुवर्ड्स ओबीसीज। उतना ही नहीं, ये कांग्रेस नेता ने ये मंडल कमीशन सिफारिश के समय में जब सदन में चर्चा हो रहा था, विरोधी दल नेता के नाते राजीव गांधी ने किस तरह ये ओबीसी समाज का आरक्षण को विरोध किया। अरे मंडल कमीशन में तो कम से कम सरकारी नौकरियों में, सरकारी शिक्षा में आरक्षण प्राप्त करने लेके मुद्दा था, उसी के लिए वो माना नहीं था। ये आज राजनीति में आज आरक्षण का अगर कांग्रेस कल से जो चर्चा कर रहा, ये कोई मुमकिन नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं, ये कांग्रेस हमेशा ओबीसी समाज को धोखा दिया। आज नरेंद्र मोदी जी ने आज जब से प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज ओबीसी समाज के हित के लिए इतने योजना और इतने कार्य। 2 मिनट कंक्लूड प्लीज। और मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये मोदी जी ने 2 बार प्रधानमंत्री बने, तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने का माहौल बन गया। ये सही नहीं पा रहे। हमेशा मोदी जी के जाति के ऊपर टिप्पणी करना या चाय बेचने वाले बोल के ऐसा टिप्पणी करना। चाय बेचना कोई गना नहीं है, देश को तो नहीं बेचा, चाय बेच के गरीब परिवार से आके ये देश को चलाकर आज विश्व
पूरा आज मोदी जी के ओर देखने का आज मोदी जी ने देखा। और हमारे तेलंगाना से मैं आता हूं, हमारा बीआरएस के नेता बता रहे हैं ये हम वो ओबीसी के और महिला के बारे में हमदर्द बता रहे, ये तो हमेशा मैं दूसरे तेलंगाना राज बनने के बाद एक महिला को भी वो मंत्रिमंडल में शामिल किया, आज बता रहे ये महिलाओं के बारे में आंसू बह रहे हैं। उसी तरह ओबीसी समाज के लिए किस तरह अपमान किया ये बीआरएस ने आज सदन में प्लीज माननीय प्रफुल्ल पटेल जी नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री महेश जेठमलानी, माननीय महेश जेठमलानी प्लीज। श्री प्रफुल्ल पटेल. Sir, I've just been asked to speak. Okay, okay. Get going, get going. So, how much time do I have, sir? May I ask? How much time do you need? 15 to 20 minutes. How much time do you need? 15 to 20 minutes, sir. All right, you get 5 minutes. Go ahead. So I should have pitched my case higher. Honorable Chairman, with your kind permission, I rise to wholeheartedly support this most significant and path-breaking constitutional amendment, the 128th Amendment Bill 2023, also known as the Nari Shakti Bandhan Adhiniyam. So, our first experience with women's representation in a legislature was in the Constituent Assembly. 15 women members represented us in the Constituent Assembly. Out of them, 10 spoke, and all 10 of them did not pitch for reservation. They did not pitch for reservation, and they said that we want women's representation based on merit. So Hansa Mehta's speech summarizes the expectation of women members. We have never asked for privileges of reserved seats, quotas, or separate electorates. What we have asked for is social justice, economic justice, and political justice. So all members who spoke reposed great faith that men who have fought and struggled for the country's freedom would guarantee the rights and liberties of women. Now, sir, what is the experience up till 2014 when the NDA government first came to power? So a quick look, because questions have been asked, why not 2014? Questions have been asked, why are you unfolding your social welfare program over here? But, sir, a quick look at the objects, only to remind them of their promises in the Constituent Assembly, the hopes of the women in that Constituent Assembly, and the faith they reposed in the men of the future that rule this country. I read paragraph 2 only to remind them of what in their long tenure, including the 10 years of UPA government, they did not do. Government has taken a number of steps to bring Nari Shakti to the forefront through women's empowerment and women-led development, resulting in substantial improvement in financial independence of women and availability of equal access to education and health. Government has also emphasized ease of living, especially for women, through various initiatives, including Ujjwala Yojana, access to toilets under Swachh Bharat Mission, financial inclusion through the Mudra Yojana, etc. However, the empowerment of women will require greater participation of women in the decision-making process as they bring different perspectives and enrich the quality of legislative debates and decision-making. So had they done their job in their tenure, the first 5 years was spent in empowering women through financial inclusion, social justice, and dignity. It did not strike them at all. The shame of open defecation did not strike them at all. It is us who did it in the first tenure.
So the next question that is raised is, can this be implemented before 2024? So it can't. That's a given. Unless certain things have to be ignored. Every time there is reservation, and we are now talking about women's reservation, 3 procedures have to be followed. The latest census figures, B, readjustment of boundaries by a delimitation commission, and C, identification and notification of constituencies for the purpose of reservation, in this case women's reservation, by the election commission. Now it is possible that even if we could omit the first 2 steps by using the census of 1971, that is the census that prevails today as per the constitution, that we go for boundaries, territorial boundaries of constituencies as per the census of 1971. In 1971, there were 55 crore people. Today, there are 1.4 billion people. So, you will have to go by a census which is dated. You have twice the number of seats if you do a fresh census today. Secondly, the procedure of identifying reserved constituencies for women cannot be completed by February, March 2024 because there is a procedure involved. And consider if you want to avoid this procedure. The Election Commission has to follow a particular procedure. First of all, it publishes its proposal. This is even if you want to give up. You want to go by the present census, not wait for the next census. If you want delimitation to be dispensed with by the Delimitation Commission, you still have to go through an Election Commission identification process of reservation seats. Now that requires a procedure. The procedure is, first, publish proposals for constituencies to be reserved for women in the Gazette of India and the official Gazette of the state concerned. Secondly, specify a date on which such proposals will be further considered. And third, consider all objections which may have been received by it. What? I am not yielding, and why are you talking? Sir. Carry on. Sir, consider all objections. Consider all objections which may have been received by it, that is the Election Commission, before the date specified for its consideration, and hold one or more public sittings at such place or places in each state as it thinks fit. This is a mandatory procedure, and it accords to transparency, it accords to justice, it accords to the views of all stakeholders. The Commission also sits as a court when it identifies constituencies for reservation. It sits as a court and can take evidence on oath for determination of reserved constituencies. This procedure is meant to guarantee fairness, transparency, and natural justice to all stakeholders. No member of either house would want to do away with this procedure before constituencies reserved for women are identified. The alternative is to leave it to the arbitrary diktat of the Election Commission with the inevitable discontentment and heartburn it will cause you people. Members who insist on implementation for the 2024 Lok Sabha election have, with respect, not understood the inbuilt safeguards of the reservation procedure, and a demand for haste will only be at your own peril. Now, is it possible before 2029 and at the earliest after 2024? Yes. On the other hand, the scheduled 2021 census was postponed due to COVID
it is supposed to commence in the beginning of 2024. There is now digitalization. There is now digitalization of the census procedure. The census can be completed expeditiously and possibly within 2024 itself. Thereafter, the next two steps of delimitation by the Delimitation Commission pursuant to the census and identification of reserved constituencies for women can be completed by 2025. By 2026, reservation for women in state elections can be a reality, and consequently even so more for the 2029 Lok Sabha elections. I am afraid you people do not know the procedure that is required for identification. And please do not mix up. Please do not mix up OBC. Please conclude now. Please conclude. Sir, I will conclude, sir. In short, sir. Nick, conclude on a pleasant note. Yes. Sir, this is a bill. One of my young friends, Kartikeya Sharma, honorable member of this House, said that this is a bill whose time is due. I say that this is a bill whose time is overdue. I wholeheartedly support this bill. Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, first let me request you that I talk from this seat. I appreciate. Thank you, sir. So thank you for giving me an opportunity to talk on this very historic bill, which is, as Mahesh Jethmalani, honorable member, mentioned, whose time is long overdue. Time has come is not the word, but it is long overdue. And I actually what happened? Oh, okay. Yeah. No. Thank you very much. Yes, what's the problem? No, he's not objecting to that. No, he's not. I think certain things have to be over. Thank you very much, Pramod Tiwari ji. Thank you. But it speaks of a high level of attention. That's right. 360 degree. That's right, sir. But I'm very grateful that you reminded, sir. Sir, I speak in favor, and this is an intervention that you permitted me, I speak in favor of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. And this proposed 128th amendment has actually been very thoughtfully crafted, considering that we are at a very critical stage of our development process. We've seen the success, and I certainly want to credit Shri P.V. Narasimha Rao ji's government for having brought in the 33% reservation in the Panchayat Raj at that time. And as a result, we've seen the groundswell at the Panchayat level, where 33% reservation today by many states has been increased to 50% as well. About 20 states have already brought in 50% reservation, and showing, therefore, the contribution of women at the Panchayat, although it started with 33%, now has gone up to 50%. There are no regrets. Actually, people are very happy that there's actual participatory process which is seen in the ground. And in this context, I remember one of the earliest steps that as Chief Minister, Honorable Prime Minister in Gujarat had taken up was also to encourage
50%, and also unanimous elections he would incentivize so that it should be non-partisan and that it should be with a common call taken by the panchayat. So innovative ways of wanting people's participation has been always attempted to. So this one is long overdue because it partly also answers a lot of members who have been saying from the morning, why did it take 9 long years for you to bring the bill now? I would like to respond, and equally as I'm going down talking about this bill, it is important, sir, that we build consensus and also show that we are committed for the economic, social empowerment of women as well. We've heard several members today speaking about how since 2014, there have been very sincere ground-level attempts to provide house, provide drinking water, provide smoke-free kitchen, provide dignity, which was a word used by Mahesh Jethmalani just before me, about providing toilets and so on. So these are also the fundamental bricks which build on empowering women. So social empowerment, economic empowerment, I'll go into a bit of detail a bit later. So what this proposed bill provides for is reservation of seats for women in the House of the People, in Lok Sabha. I've heard some members talk about reservation also should be brought in for the upper house. With the indirect election process and the way in which preference is shown in the voting, it's just not going to be possible to do any reservation. Let us keep that outside of this discussion, although it's well-meant. I mean, the well-meaning suggestion has come in, but that's not going to be workable if it is not a direct election. So this bill actually provides, therefore, for reservation of seats for women in the House of the People, Lok Sabha, and also in the legislative assemblies of every state, and also in the National Capital Territory of Delhi. It proposes, sir, again, people have picked up on this word, but I reiterate it. It proposes that as nearly as maybe 1/3 seats shall be reserved for women. So that's the first two salient feature of this bill. So what it would do is to bring in a new article 330A, which is intended for reservation of seats for women in the Lok Sabha. Second, it also brings in a new article 332A, which proposes reservation of seats for women in the state legislative assembly. Another, which is an existing article, which is 239AA, is proposed to be amended for providing reservation for legislative assembly of National Capital Territory of Delhi. So all these three are happening. It also then intends that there shall be a reservation for women belonging to scheduled castes, scheduled tribes, in respect of the seats reserved for scheduled castes and scheduled tribes. So consequential amendments, sir, over and above all this, will also be made to the relevant acts for Puducherry and for J&K. Now, we come to the point on which, again, the previous speaker has gone into greater detail with his legal acumen to say how exactly this is going to be implemented. I'll have a minute on that. As far as the implementation of the proposed reservation for women, the new article 334A is inserted into the Constitution. It intends that after the bill is enacted, and after the bill comes into operation, and thereafter that, whenever the first census takes place, and the relevant figures for that census are published, a fresh delimitation exercise shall be undertaken, and for the purpose of delimitation of seats for providing reservation for women in the Lok Sabha,
in the state legislative assemblies and also in the Legislative Assembly of Delhi. Now, this exercise of delimitation, sir, will be limited to identifying the number of seats and those seats which are to be reserved for women, and it shall not affect the interstate distribution of seats of Lok Sabha and the legislative assemblies of the state. So we just want to make this absolutely clear as to what this constitutional amendment bill is proposing to do, and the reservation of seats shall cease after a period of 15 years from the commencement of this very proposed law. So this is where I think we are coming up with this constitutional amendment. It also sort of very clearly states that this reservation shall not apply until the Lok Sabha or Legislative Assembly of a particular state or the Legislative Assembly of Delhi is dissolved. So that is the main feature of this proposed constitutional amendment. Is this the first time we are talking about this reservation for women? Not at all. There have been 4 genuinely serious attempts to get this bill through, sir. The first ever attempt was in 1996 on 12th September in the 11th Lok Sabha, where Sri H.D. Devegowda was the Prime Minister, and that bill which was brought in was referred to a joint committee headed by Srimati Geeta Mukherjee, who immediately took up the work, and within 3 months, on 9th December 1996, she gave her report, and the bill remained there for almost a year. But because of the dissolution of the Lok Sabha, the 11th Lok Sabha, on 4th December 1997, this bill also lapsed. This bill, one particular feature which I'd like to highlight is this bill provided for So it provides for rotation of seats. So the next one, second attempt made, was on 14th December 1998 by Sri Atal Bihari Vajpayee's government, 12th Lok Sabha. In this, the bill was almost identical to the one which was presented earlier, but a 15-year period was brought in. Now, this bill also lapsed due to the dissolution of the 12th Lok Sabha on 26th April 1999. A second attempt was made again by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on 23rd December 1999. That was the 13th Lok Sabha. And then the bill hadn't been pursued at all because they couldn't develop any consensus of view. And again, this also lapsed on the dissolution of the 13th Lok Sabha on 6/2/2004. The fourth attempt, which is the most recent attempt, happened on 6th May 2008. In the Rajya Sabha, the bill was introduced under Dr. Manmohan Singh's government, UPA 2, very identical bill to the one which was previously tabled, which couldn't be pursued in the Lok Sabha. And this bill, which was brought in the Rajya Sabha, was referred to a standing committee, a department-related parliamentary standing committee on personnel, public grievances, law and justice on 8th May 2008 for examination. And it got passed, taken up for consideration and passed in the Rajya Sabha on March 2010, and then it was transmitted to the Lok Sabha on 12th March 2010. It was just transmitted. But till 2014, it couldn't be taken up for various reasons. I'm not here going to go into the detail as to why it couldn't be cleared, but it didn't get cleared, and it lapsed. It is important for us to know that it lapsed
on the dissolution of the 13th Lok Sabha on 18 May 2014. So, I may be pardoned if I'm repeating something which honorable members already know. There is no bill which is pending that I have to bring back here to say, we'll consider this one, it's been waiting from then. No bill is waiting. With the dissolution of the Lok Sabha, that bill, which was passed in the Rajya Sabha, but which it didn't remain here, which naturally got transmitted to the Lok Sabha, also lapsed. So there's no bill before us. So empowerment of women in India is not a new thing. I just would like to go back in history to identify a few names which stand out for a lot of proof that is so required to say this civilization always held women high. Now, I'm not going to this thing, did we treat them as goddess, give us equality? I've heard a lot of members say with a lot of concern, we don't want to be treated like goddess, treat us equal. But it is a fact that we have held women very highly, and the women also had the courage to stand up and speak for themselves. So it's not a new thing for us. I'll just give you the example of Satyakama's mother. An Upanishad has been given in his name. He was a bright star. But when he went in search of his guru, the guru asked him, oh, okay, you want to become my student, but who's your father? Would you please tell me? He didn't know the name of his father. He goes back to his mother, Jabala, to ask her, Mama, please tell me who's my father. I have to go tell my guru, otherwise he'll not admit me. And the mother had the courage to tell him, I don't know who your father is, go tell this to your guru. And the boy, in all his earnestness, goes back to the guru and says, sorry, this is the reply given by my mother. And the guru understands the situation and readily admits him for his curiosity. That's the civilization we are talking about. It's not a civilization which treated women of one particular group or another particular group differently. We've treated all women with fairness. There can be differences during the age as we are coming down to today. But that is Satyakama Jabala, and Jabala, the mother, who could tell her boy to go say with pride that no, you'll know your mother's name, but the mother doesn't know the father, and the guru had no objection. Sir, similarly, when Adi Shankara had an argument with Mandan Mishra, there was a debate going on, and who was the judge there? A woman, Ubaya Bharti, Mandan Mishra's wife. Could she have been admitted or accepted as a judge between the two people debating if only there was some hesitation about dealing with women differently? They readily accepted her. She had the scholarship is one thing, but to accept a woman to judge between them two as to who is going to be the victor also reflects that men in India, learned or otherwise, did not have a different idea of woman, and that Ubaya Bharti's example tells us that. There are, of course, 22 women who contributed very richly to our Vedas and Upanishads. I'm not taking each one of their names. Gargi and Lopamudra stand out. Similarly, I heard members this morning also recall from the south eminent fighters, warriors. I also will name Abhay, who was a great, simple two-line aphorisms from her, always enamors all of us. Karakal Ammayar, who was a great bhakti saint. She's treated as a Nayanmar. So in India, women have had a role in literature, a role in very many different situations. Women warriors, sir. Rani Abbakka, Kitturu Chennamma, Velu Nachiyar, Rani Gendunlu, Lakshmi Segal, and of course Jhansi Ki Rani. All of them, I've just taken a random list. So is their prowess in science. E.K. Janaki Ammal was one of the earliest scientists of India. Asima Chatterjee, Anandi Ben Joshi, Anna Mani, and Darshan Ranganathan are all women of eminence in science. So we've had this culture
of allowing women to do whatever their aspirations lead them to do, and we've respected it. Of course, as they say in Hindi, vikrutiya have come into the system, we'll have to cleanse that, and efforts are being made. Now, in this, I want to highlight, sir, that the party that I represent, BJP, has been consistent in its support for women's reservation. BJP held its national convention in 1994 in Vadodara, and there very clearly stated that we stand for reservations of women, reservation for women in the parliament and also in the state assemblies. If that was in 1994, 1998, BJP reiterated its commitment for women's reservation by introducing it in the Lok Sabha, which I just mentioned a while ago under Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. In July 2003, BJP held a national executive in Raipur in Chhattisgarh, and there they passed a resolution seeking 1/3 of all Lok Sabha constituencies to be converted for reserving for women. Progressively, that opinion has been refined now that in 2007, in the national executive, it approved 33% reservation for all organizational positions within the party. And in 2008, sir, BJP amended its constitution to provide 33% reservation to women in its cadre posts as well. And let me take this opportunity, sir, in all humility, to thank my party. I am one of the beneficiaries of this reservation for women that I am here today, and I thank my party for having given me that opportunity. So BJP has been consistently supportive of women's reservations, sir. I remember those days were early days for me as a party spokesperson, but the now lapsed bill, which was passed in Rajya Sabha in 2010, late Sri Arun Jaitley supported it passionately in the Rajya Sabha, and it was passed in the Rajya Sabha. Of course, when it transmitted to Lok Sabha, it didn't get through. So BJP has been absolutely steady in its support for women's reservation, and this morning I heard some honorable members also refer to some very picturesque moments when Honorable late Srimati Sushma Swaraj had waited outside the Parliament House, received Brinda Karat, the Honorable former member of the Rajya Sabha, and they both hugged each other in joy that the Rajya Sabha passed the bill and it is now the turn for Lok Sabha. So there was a complete, across party lines, a sense of wanting to achieve this, and today we remember late Sushma Swaraj, and of course even today the activists and also former members of parliament who have all been pursuing this agenda. To further this point, sir, 2014, prior to the Lok Sabha election, BJP's manifesto, the Sankalp Patra, openly said that BJP is in favor of bringing reservation, 33% reservation in parliament and also in the state assemblies. So did 2019 Sankalp Patra. So just as Article 370 has always been in BJP's manifesto, so is women's reservation always been in BJP's election manifestos, be it 2014 and now be it 2019. Sir, Sankalp se Siddhi principle, which Honorable Prime Minister follows very earnestly, is also proven by the fact that everything that which is mentioned in the Sankalp Patra is taken up to the level of achieving, that is, Siddhi tak, prapt karne tak, we follow it in earnestness. I also heard some members this morning talk about you were paying attention to Article 370, you were paying attention to triple talaq, but you didn't do this women's reservation. I'd like to take this opportunity to say through you, sir, Article 370 has a very big women's component in it. Inter alia, you didn't allow women to hold property in J&K. Is it not important for them to have that honor back? They have, after all, been born there.
Well, if they married somebody else from anywhere else, how right is it under Article 370 to deny them ownership of property? Is that not important? Therefore, when we restored the normalcy and also removed Article 370, women, SC, ST, Bakarwals, all of them get their rights. That is why Sankalp Se Siddhi principle of Honorable Prime Minister makes complete sense. And between 2014 and today, these are the kind of achievements to empower women which have been happening. Similar is, I heard our Honorable National President, Sri Nadda, speak about triple talaq this morning. He said triple talaq is not in A country, B country, C country, all of which are Muslim-dominated countries. But in India, it took us a whole process of going through the courts and again politically convincing our people and then bringing it in. But Prime Minister Modi did not hesitate. He said if that has got to be done for giving the rights to the Muslim women, we shall do it. So triple talaq also happened. So Nadda ji clearly explained, we don't involve or indulge in appeasement politics. But it is important for us for restoring the rights of women, because in women-related matters, sir, and I can say with complete confidence, in women-related matters, we don't play any politics. It is an article of faith for the Honorable Prime Minister, and therefore we do everything that we've done, whether it is Article 370 or whether it is triple talaq or looking at now Women's Reservation Bill. All of it is part of our manifesto anyway. So between 14 and 19, I shall not spend too much of a time because yesterday all of us heard Honorable Home Minister speak in the Lok Sabha. He listed out the various measures which have been taken by Prime Minister Modi for social empowerment, for economic empowerment of women. I'll just very quickly flag off a few of them, sir. Ujjwala for smoke-free kitchen, 9.59 crores of people have been given free connection and 200 rupees subsidy per cylinder, and newly we are adding 75 lakhs more connections. Swachhata Abhiyan, providing a dignified life for women, providing toilets to them. 11.72 crore toilets have been built in this country. Beti Bachao, Beti Padhao has actually helped in restoring a fair balance between gender, because gender asymmetry prevailed all over the country. I heard Honorable Member Thambi Durai talk about how there was this cradle scheme which was brought so that children, as soon as they are born, being girls, are not killed. And that was a step some time ago taken in Tamil Nadu. Many states have done many such steps in order to restore that parity in the gender, in the sex ratio. Sir, Prime Minister Modi's government is the one which gave from 12 weeks of maternity leave to 26 weeks of paid maternity leave for women. These are empowering women. What were we doing between 2014 and 19? These were the things which we were doing. So we didn't forget for a moment empowerment of women. Water to the house for health reasons. Otherwise, they were spending hours going miles to get to drinking water. 9.82 crore new connections of Nal Se Jal, Gar Gar Jal has been implemented. So I won't go further into that list of social empowerment and the economic empowerment. But I certainly will take a few more minutes, a bit of considerable time if you would permit me, sir. Empowering women, there cannot be a more substantial measure than finding them in the armed forces. I list out the kind of things Prime Minister Modi has taken to get women have that equal treatment. Many of our honorable members saying, treat us equal. We don't want you to do puja or treat us like goddess. No. Can there be a better place than the 3 armed forces where we have brought women to be at par with men
and they stand there clearly. I'll give out the list, sir. All wings of the Indian Armed Forces have women in combat roles now. Women are allowed in combat services and in supervisory roles. I'll start with the Central Armed Forces, paramilitary forces. In 2016, Prime Minister Modi's government took a call, a historic move, decided to reserve 33% posts at the constable level for women in CRPF, CISF, and to begin with, 14 to 15% posts at the constable level in the border guarding forces such as the BSF, SSB, and ITBP have been brought in a phased manner. That's equality. That's treating men and women equal, literally in the uniformed services. Similarly, sir, admission of girls in Sainik schools, unimaginable, because there was so much resistance. No, you can't do it. Admission of girls in Sainik schools, with effect from academic session 21-22, girl cadets have been admitted in all existing 33 Sainik schools. That was clearly a step which was taken as a decision by Prime Minister Modi's government. Indian Army, sir, has opened up entry for women candidates in the National Defense Academy. You know how prestigious that center is. And it is one of the male domains which you could never breach. But today it has been opened for female cadets. 19 cadets, including 10 for Indian Army, joining academy every 6 months. Women candidates, women cadets. Sir, permanent commission is also being granted to women officers in the armed forces. You may think that it is only in the armed forces medical corps, or it's in the dental corps, and so on. No. Or it is in the nursing service. No. Over and above that, now women are being given permanent commission in the armed forces as women officers. Sir, similarly, Indian Army has opened up avenues for women officers to serve as pilots in the Corps of Army's aviation. So flying the helicopters for the Army is done by women now. Women officers are also being considered for colonel rank and are being given command appointments so they can lead commands. Also, sir, there are other ranks which are also getting into the core of the military police in the Indian Army, which has been introduced from 2019. So is the case with Navy. I wouldn't want to read each one of those steps, but today, whether it's Army, whether it's Navy, or whether it is the Air Force, they are all being treated at equal with men. Agniveer scheme, sir. I was very happy to hear Honorable Member Sumitra Balmik. Is she here now? Yes. She mentioned it, sir. Women are getting recruited as women Agniveers. I was going to mention it, but I was glad to hear it from another member of this House. From the first batch itself, we have women Agniveers. So now, without taking more time on talking about the larger issues, I'll come to responding to some of the members who have raised some issues where I wish to explain. Sir, members Ramnath Thakurji, K.C. Venugopal, Priyanka Chaturvedi ji, Phulo Devi Nettam ji have all raised this issue about, you came to power in 2014, why have you taken 9 years to bring this bill? I think I've explained it, that we've spent a lot of time and attention on delivering on social empowerment and also on economic empowerment. In the meanwhile, you also saw how they have been empowered to get into the armed forces and the central armed paramilitary forces as well. Explanations and details with facts have been given by the Home Minister yesterday in Lok Sabha. Women have become now job creators. 29 crore women
have also benefited because of the Mudra scheme, where 70% of all beneficiaries are women. So there are several schemes which has helped women to come up to some level. That's what we've been doing since 2014. Then there was this question, I think in general, several members have raised, saying, why a special session for this bill? Sir, that simply, we've come into a new complex, new building for Parliament, new India. We would like this Parliament to deal with one of the best bills that it can deal with, where all of us agreed. And I'm glad to say this. I thank from the bottom of my heart for the consideration that all the parties have shown, irrespective of the little reservations they may have.